माँ याद कर रही है और मुड़ कर देखते हैं, पूछा उन्होंने कहाँ है? तो कहा पीछे। तो सड़क के किनारे दुकान से बाहर सड़क के किनारे वो खड़ी है एक महिला नकाब में, फातिमा दी, फातिमा नाम है। तो जाते हैं, आदाब वगैरह करते हैं, नमस्कार होता है। तो फातिमा दी कहती हैं कि अरे तुम तो बड़े आदमी हो गए हो, सुना है कि अफ़साने लिखते हो, कहानियाँ लिखते हो, फ़िल्मों फ़िल्में बनी हैं तुम्हारी कहानियों पर, भारत सरकार का अवार्ड अच्छा, बड़े आदमी हो गए हो और बड़े फ़नकार हो। तो कहते हैं कि नहीं दीदी, अम, झूठ बोलने की आदत को मैंने पेशा बना लिया है। यही कहते हैं, यानी बड़े अफ़साना निगार हो, कहानीकार हो, तो कहते हैं कि नहीं झूठ बोलने की आदत को अब पेशा बना लिया है। यानी जो कल्पना आदमी करता है मन में, उसको कहानी के रूप में ढाल देता है। बड़ी कल्पना हुई तो उपन्यास के रूप में ढालता है। होता यही है, ये कोई विचार एक कल्पना जन्म लेती है हमारे हृदय के भीतर और धीरे-धीरे आकार ग्रहण कर लेती है। तो कहानियों का विस्तार और विकास भी ऐसे ही हुआ है और उसका बड़ा रूप जो होता है, वो उपन्यास के रूप में आता है, नॉवेल बन जाता है और छोटा रूप वो कहानी है। तो ये सिलसिला चलता रहा है सभी भाषाओं में। जैसे कविता में भी एकल कविता है तो कविता है और जब वो कथा का रूप कथानक आ जाता है उसमें तो महाकाव्य बन जाता है, प्रबंध काव्य बन जाता है। तो इस तरह की चिनगारी अ, मैं समझता हूँ कि वो कवि का ऐसा रूप है जो अपने प्रभाव में बहुत व्यापक है। स्वरूप उसका भले ही छोटा है, आकार छोटा है, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से उसकी व्यापकता अधिक है। मैं इन्हीं शब्दों को विस्तार में नहीं चाहूँगा, आप सबका स्वागत करता हूँ मंच पर कि आप अपनी-अपनी भाषा में मेरे सामने 5-6 लोग हैं, 5 लोग। हाँ, ये पाँचों जी, अच्छा ठीक है, धन्यवाद। ये अ, जयश्री बोडो, ये बोडो की लेखिका हैं। स्वर्णा कुमारी जी, स्वर्णा किलारी, ये तेलुगु से हैं। गोलप मंजरीकर उड़िया की हैं और अंस्वार उद्दीन साहब बांग्ला में थे। ये मैं समझता हूँ कि जो 4 चरण हैं, अलग-अलग भाषा के चरण हैं, 4 चरण। तो ये आज इनका पदार्पण हुआ है हमारे इस सभागार में और मैं इनका पुनः स्वागत करता हूँ और एक-एक कर मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वे अपनी कहानी का पाठ करें और हम सब लाभान्वित हों। तो सबसे पहले जयश्री बोड़ो जी, पूर्व लेखिका हैं, इनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि अपनी कहानी को धन्यवाद। और 10 सीमा है 10 से 12 मिनट, लेकिन कहानी भी छोटी होगी या नहीं तो पीछे 1-2 पैराग्राफ अगर चाहे तो, हालाँकि वो क्रम टूटता है, ऐसी कोई बंदिश नहीं की जाती है, लेकिन तब भी समय को देखते हुए समय का उपचार जो है पूरा सुप्रभात, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं पहली मेरी कहानी को बोडो भाषा में एक पैराग्राफ पढ़ूंगी ट्रांसलेशन में। आवलुरी आरो उदांस्रि हान्थुसिं दैयाव जब्ब हाबनानै खासिन मेथ'काफोरखौ मना गेजेरसे खानानै लानानै फैबाय आवलुरिया। दा बेलासिनि हाथायाव बाहागो रानै फानहैनो हासै। बोरियाव फैनानै दख'ना फैखोस्रोनानै आथिंखौ मोजाङै नायबाय बियो। माब्लाबानो बेदलावा मानै गोसो बाथाबबोदों, उनखौनो मोनस्लाबलायाखै। खुदै मुजुफुरनानै आलारि हाग्राजों अरलाबनानै मानैखौबो गारबाय बियो। बेदलाव बानाय गोरलैयाव गल गल दागो होबाय, थैबो एसे जिरिदों। आलारि हाग्राखौ एसे फैब्रुं हरबावनानै बेदलाव अरनाय जायगाखौ खेबसेबाव मोजाङै हुख'बावबाय बियो।
Bedlaw dia naangani tapay tapla garay jagan. Dan wo suhinani flon से सुने तानांग सीजन अभी इसका हिंदी मैं पढ़ूंगी आउलूरी और आजादी घुटने तक पानी में जुबुंग जुबुंग उतरकर जल्दी-जल्दी मिर्चा फूल को आधा आधा थैली होने तक तोड़कर जल्दी से आई आलूरी। शाम के बाजार में वो उसको ही अलग-अलग हिस्सों में बाँट कर बिक्री करेगी। कार में आकर उसने अपने दफना को थोड़ा उठाया और पैरों में देखने लगी। उसने सही अंदाज़ा लगाया था। वो चोंच उस सिर पर चढ़ गई थी। छू, 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 छू। वो थूक मारकर आलारी घास को थोड़ा तोड़कर चोंच के ऊपर लगाकर जोंक को निकाल दिया। जहाँ जोंक बैठे थे वहाँ गोल-गोल निशान बन गया। थोड़ा-थोड़ा खून भी निकल रहा था। घास को तोड़कर जोंक बैठी जगह पर फिर से एक बार और उठने लग गई। जोंक का थूक लगे रहने से घाव बन जाता है। जाकर जो कोई चीज़ जगह पर फिर से तुलसी पत्ता निचोड़ कर लगा लेगी। इस तरह की चींटी, मोल आदि काटने से भी आउलरी को कोई डर नहीं लगता। बचपन से ही इन सब चीज़ों से जीवों से लड़कर आई है वो। जंगल के पास के गाँव की लड़की है वो। बारिश हो या सूखा, हर ऋतु में तरह-तरह के कीड़े-मकोड़े से भरा रहता है गाँव का रास्ता। आस-पास में जंगल, खेत, बागान आदि धान लगाते वक़्त भी लोग से लड़ाई होती है, मरते वक़्त भी सांप आदि के साथ जूझना पड़ता है। बारिश के दिनों में जब लगातार बारिश होती रहती है, तब मोल, जोक आदि विचरण करते रहते हैं। सूखे दिनों में भी तरह-तरह के कीड़े घर के आंगन में चलते रहते हैं। परवल जैसे कीड़े का विचरण देखना है, ना सरसों की सूखी हुई घास से निकली हुई छटपट आदि जो ज़मीन पर भीड़-भाड़ का रेला लगा देती है। चींटी, छिपकली आदि को तो देखकर भी अनदेखा कर देती है और उनकी गाँव की लड़कियाँ। प्रकृति की इस तरह की अद्भुत सृष्टि के साथ जीवन बिताने में भी मज़ा आता है, डर भी लगता है। आनंद इसलिए आता है क्योंकि प्रकृति के ये सब प्राणी जीने के लिए एक प्रेरणा बनते हैं। डर इसलिए लगता है कि ये सब देखने प्राणी देखने में बहुत ही छोटे दिखते हैं, लेकिन बहुत ही होता है तो इंसान जान के ले सकते हैं। अवलूरी भूल नहीं सकती कैसे उसके गाँव के रिश्तेदार जंखाओं की तरह ज़मीन पर सोते समय कान में खटपट घुसने की वजह से तड़प-तड़प कर मर गए थे। उसकी आँखों में अभी भी दिखाई देता है, मतलब वो की वजह से उसकी बुआ हमको की हालत क्या हो गई थी। इन सब से ऊपर बहुत ही डरावनी हालत हुई थी उसकी उम्र की चिंपड़ी की। उस दिन फिर से अवलूरी को मछली पकड़ने जाने के लिए साथ में बुलाया था, लेकिन अवलूरी आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है बोलकर नहीं गई थी, उसको गुस्सा सा लग रहा था। चिंपड़ी और हाइड्रो एक साथ गई थी मछली पकड़ने जंगल में के पास के एक नदी में से गेंदाबिल नाम से जाना जाता है। गेंदाबिल में बहुत ही मछली मिलती है। बड़ी-बड़ी मछली, काली-काली बड़ी-बड़ी झींगा, बाम मछली आदि बहुत मिलती है। लेकिन पानी यहीं पर गहरा, यहीं पर छिछला है। पता नहीं चलता किस तरफ क्या है। इसलिए लोग डरते हैं इस बिल में मछली पकड़ने के लिए। फिर भी जोलोंगा, लाव हरीपत आदि मछली पकड़ने जा रहे हैं, ये सुनकर चिंपड़ी और काइटू गई थी मछली पकड़ने। उन दोनों ने मन लगाकर मछली पकड़ी थी। बहुत सारी मछली मिली थी उन लोगों को, पूरा खलोई भरने वाला था। लेकिन धूप ज़्यादा होने की वजह से दोनों पहले ही घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुँचते ही चिंपड़ी को अजीब-सा लग रहा था कि उसकी कमर में है, उसकी नाभि में कुछ काला धुआँ लग रहा था। वो दुखना को थोड़ा ढीला करके अपनी नाभि में हाथ डालकर देखा, उसकी कमर में कुछ चिपका-चिपका लग रहा है। पानी खाँसना जो कर वो अपनी नाभि में हाथ डालकर देखा देखा था, हाइटू को वो उसको बोलकर कि तुम थोड़ा उस तरफ मरो तो। हाथ से छूकर ठीक से पता नहीं चला तो वो दुखना को थोड़ा और से देखा। फिर वो ज़ोर से चिल्लाई और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। चिंपड़ी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लोग इकट्ठे हो गए थे। आइतू डर से काँप रही थी। चिंपड़ी की कमर में एक बड़ा जोक था जिसका आदि मुँह और अंत मुँह दोनों नाभि पर था। जल्दी-जल्दी वो लोग इसे उठाकर गाँव के नज़दीक डिस्पेंसरी में लेकर गए। मछली और मछली पकड़ने का सारा सामान उधर ही गिरा पड़ा हुआ था। डिस्पेंसरी में कंपाउंडर द्वारा बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जोक नाभि से निकल नहीं पाया था। अपने मन से मुताबिक सोच-सोच कर जोक खुद ही निकल गई, लेकिन तब तक चिंपड़ी की जान निकल गई थी। ईश्वरीय बनती चिंपड़ी की इस तरह से प्राण जाने से ना ही सिर्फ परिवार में, लेकिन गाँव के लोग और आस-पास के गाँव के लोग भी डर गए थे। गंदा बिल में मछली पकड़ने अब कोई जा नहीं सकता। अवरोही जब बहुत छोटी थी, उस वक़्त इलाके में एक डरावनी परिस्थिति बन गई थी।
चारों तरफ आज़ादी की चाहत गूंज उठी थी। भारत की आज़ादी की गूंज, ब्रिटिश के पैरों तले से निकलने की चाहत की हवा सबके मन में जाग उठी थी। हमारे देश का नाम क्या है तुमको पता है ना बेटा? एक दिन काम से लौटकर उसके दादाजी जमादार खगन कुसारी ने आउलूरी से पूछा था। तब तक आउलूरी को पता नहीं था कि उसके दादाजी ब्रिटिश सेना में सैनिक थे। लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलते हैं दादाजी, जगह-जगह लोग चिल्लाते रहते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान की जय बोलते रहते हैं। 4 साल के आउलूरी ने दादाजी की गोद में उछलकर बताया, सुनो बेटा, हम लोग अभी जिसके नीचे नौकरी कर रहे हैं, वो लोग ही हमारे शत्रु हैं। वो लोग ही हमें पूछ रहे हैं। देखो तुम इस बंदूक को। इस बंदूक में गाय की चर्बी चर्बी और सूअर की चर्बी लगी हुई है। हम लोग तो गाय को नहीं खाते हैं ना, लेकिन हम लोग को मुँह से इसको इस तरह से निकलना पड़ता है, हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। ये तो बहुत गलत काम कर रहा है ना हमारा हमसे, इसलिए हम सैनिक ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो गए। हम लोग अभी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये हिंदुस्तान तो हमारा देश है, लेकिन हमें कौन हुक्म दे रहा है? ब्रिटिश लोग। हम अपने देश को दूसरे लोगों से शोषण करते देखते रहेंगे। कैसे हम उन लोगों के रहते रहेंगे? कैसे हम दूसरे लोगों के दास बनते रहेंगे? हमें आज़ादी चाहिए। इसलिए हम आज़ाद हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद बोलकर ब्रिटिश लोगों को डराना चाहते हैं। वो मन लगाकर सुन रही थी अपनी दादाजी की बातों को। एक बार बंदूक को छूकर देखना चाहती थी, लेकिन गाड़ी की चाबी हाथ में लगी तो सोच के वो डर गई और बंदूक से पीछे हट गई। ब्रिटिश लोगों को वो नज़दीक से देखना चाहती थी। ब्रिटिश औरतें बहुत सुंदर-सुंदर दिखती है, उसके दादाजी उसे बताते रहते हैं। एक बार दादाजी के साथ एक ब्रिटिश सैनिक आया था, वो बहुत ही गोरा था, उसने देखा, कभी ब्रिटिश लड़की भी आ जाती तो उसने मन ही मन कामना की थी। इतने गोरे-गोरे लोग, सुंदर-सुंदर लोग कैसे इतने गंदे हो सकते हैं, वो सोचती थी, क्योंकि उसने कब लोगों के मुँह से सुना था, ब्रिटिश लोग कितना जुल्म कर रहे हैं भारतीय लोगों के ऊपर। अवनूरी जिस तरह से सोच-विचार कर रही थी, लेकिन स्थिति इससे भी खराब हो गई थी। हर तरफ इनकलाब जिंदाबाद का नारा तेज होता जा रहा था। इसके दादाजी घर आना छूट गया था। एक दिन बहुत ही गहरी रात में जोर से भौंक रहे थे। कुत्ते का भौंकना लोगों के घर की तरफ ज्यादा हो गया। उसके घरवाले उठ गए थे। अवनूरी भी अपनी माँ का आंचल पकड़ रही थी। सिर से पाँव तक एक कपड़े से ढके हुए उसके दादाजी ने प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोला था, तुम लोग थोड़ा सावधानी रखो। हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ने निकल आए। वो लोग अब हमें विश्वासघात बोलकर ढूंढ रहे हैं। हम लोग उन लोगों को मिल जाएँगे तो वो लोग हमें गोली मार देंगे, नहीं तो फांसी पर चढ़ा देंगे। तुम लोग ऊपर से जुल्म कर सकते हो। तुम लोग सावधान से रहो, अच्छे से रहो। साथ में आए साथियों के साथ रीटा का मौका उठाकर उसके दादाजी निकल गए थे। उस रात के बाद अवलूरी ने दादाजी को फिर से कभी नहीं देखा। इस घटना को कितने साल हो गए आपको कभी दिल्ली में गिनती है। 80 साल से अवलूरी अब 85 साल से भी ऊपर की कमर झुकी हुई वृद्धा है। अपने पलने के लिए वो उसके उसके पास अभी कोई नहीं है। पति की मौत हो गई, बच्चों ने उसे छोड़ दिया। अवलूरी के दादाजी देश से बचे थे, ये जानकर सरकार की तरफ से उसे कुछ-कुछ सम्मान मिला था, पुरस्कार मिला था। वो लोगों के बीच काफ़ी सम्मानित व्यक्ति थी। लेकिन अवलूरी ने बहुत कष्ट उठाकर अपने बच्चों को पाला था, उसकी कोशिश यूँ ही बेकार नहीं गई थी। अवलूरी की कोशिश से ही उसका मीठा फल मिला था, उसके बच्चे बड़े-बड़े लोग बन गए थे। उसके बच्चे अब बाहर रहते हैं, अपनी माँ से अलग हो गए सब के सब। अपनी माँ के लिए किसी की वक़्त नहीं है, सब अपने-अपने कामों में व्यस्त हैं। गाँव के घर को छोड़कर अपने बच्चों के साथ रहने के लिए अवलूरी खुद भी मना नहीं करती। इस घर में ही मरते दम तक रहेंगे, उसने अपने पति से वादा किया था, इसलिए इस घर को वो छोड़ नहीं सकती। पति को देहांत हुए 5 साल से भी ज़्यादा हो गया। अब अवलूरी घर में सकते हैं। ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन दिल ही नहीं मानता है। वो बीच-बीच में जल्दी से सब्ज़ी लाकर बाज़ार में बेचती है, क्योंकि प्रकृति के साथ रहना उसको बहुत पसंद है। वो आज़ादी से रहना पसंद करती है। कोई नहीं है आस-पास, फिर भी वो अपने मनपसंद काम करके जीना चाहती है। कभी-कभी वो अपने दादाजी के चेहरे को याद करना चाहती है। उसका उनका चेहरा उसे ठीक से याद नहीं। वो अपने बचपन की सहेलियों को भी याद करना चाहती है,
लेकिन उन लोगों को कह रहा हूँ कि उसे ठीक से याद नहीं आता। जैसे कि अविन की नई युग को पसंद नहीं आने से वो लोग अपना मुँह फेर लिया हो। वो अपनी पोतियों को बहुत ही याद करती है, लेकिन जिस तरह से उसके नाती-पोतियाँ आज़ादी से उस आज़ादी में उसे कोई आज़ादी नहीं दिखती। उसके नाती-पोतियाँ कभी मछली पकड़ने नहीं जाते, कभी साग-सब्ज़ी उठाने नहीं जाते, कपड़े नहीं बुनते, साग-सब्ज़ी के नाम नहीं जानते, पेड़-पौधे का नाम नहीं जानते, कीड़े-मकोड़ों का नाम नहीं जानते, नहीं जानते। हर काम से आज़ाद है वो लोग, लेकिन क्या ये आज़ादी उन सबको वो आज़ादी दिलाएगी? प्रकृति से जुड़कर जीवन बिताने में जो आज़ादी मिलती है, जो खुशी मिलती है, ये जानने की जो आज़ादी है, वो क्या उन लोगों को उसे नहीं जा रही? सुबह उठकर वो लोग 8-10 किलो भारी बैग उठाकर स्कूल चले जाते हैं, हो कि ना हो, तेल से भाजा हुआ टिफ़िन ले जाकर स्कूल में ठंडा-ठंडा खाना खाते हैं। स्कूल से आते ही ट्यूशन में चले जाते हैं, ट्यूशन से आकर होमवर्क में व्यस्त हो जाते हैं, देर रात तक मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। क्या होगा उन बच्चों का? उन बच्चों का जीवन तो ज़्यादा मोबाइल देखने की वजह से खूबसूरती कम हो गई है। दिन भर कुछ ना कुछ काम करके सिर्फ मोबाइल देखना, टीवी देखना, दोस्तों के साथ देर रात घूमना, होटल रेस्टोरेंट से खाना मंगवा कर खाकर मोती बदसूरत होती जा रही है, तो मुँह का बीमार चेहरा अंगूरी को बहुत दुःख देता है। वो चौंक जाती है उन लोगों की आदत को देखकर। दिन-रात काम में व्यस्त रहकर किसी का भी कोई खबर लेने ना जाने वाले, हँसने का वे वक़्त ना निकल पाते बीतों का चेहरा याद करके अवधूरी बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे मनुष्य की तरह वो कैसे चलने लगी में ना कुछ शांति, ना कोई खुशी। यही है आज़ादी का मतलब। कैसी आज़ादी है जीवन की? जीवन की आज़ादी या फिर कुछ और है आज़ादी? इस उम्र में भी आप बहुत व्यस्त है, बहुत स्वस्थ है माताजी। हम लोग का शरीर ठीक ही नहीं रहता। कि बहुएँ होती है। सिर्फ बहुएँ ही नहीं, गाँव के अन्य ईश्वर की पूरी सृष्टि होती है। विचित्र लोगों के साथ युद्ध करने वाले गोविंद कसार की पोती हूँ मैं। आवलिरी खुद भी बहुत गर्व से बोलती है। गाँव में अब आवलिरी की उम्र के लोग मिलना मुश्किल है। ए बुढ़िया, इसे तुम अपना घर लगाना हाँ? रास्ते से साइकिल में बहुत सारे तिरंगा लेकर जा रहे 2 लड़कों से एक ने आवलिरी से बोला, "क्यों?" वापस पूछा। हमारे देश को आज़ादी मिले हुए 75 साल हो गया। नानी 75 साल। अब सारे देश मना रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसलिए घर-घर तिरंगा फहराने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है। तुम भी अपने घर में तिरंगा फहराना, तुमको क्यों नहीं दे रहे हम? नहीं तो दूसरों को तो हम बेच रहे हैं। सबको होकर बेचा ही जा रहा है, तो मुझे क्यों ऐसे ही दे रहे हो? अभी मेरे हाथ में एक खुदी कौड़ी नहीं है। ये सब्ज़ी बिकने के बाद मैं भी लाऊँगी तिरंगा। अगर घर-घर में तिरंगा ले जाना से अगर अपनी मातृभूमि को प्यार करना होता है, तो मैं भी क्यों पीछे रहूँ? लेकिन अपनी मातृभूमि को मैं मन से ही प्यार करती हूँ। मातृभूमि को प्यार करना मेरे रगों-रगों में दौड़ रहा है। ये इस देश ने मुझे खो दिया है, प्रकृति ने मुझे खो दिया है। जीवन में खुशी से जीने की जो आज़ादी दी है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। घर के लोग और कुछ बोले, इससे पहले कि अवलोरी साग से भरा थैला कमर में उठाकर झुकी है कमर से पूरी लंगड़ा-लंगड़ा कर चलती घर की ओर चलती। बस इतना ही, धन्यवाद। जयश्री बोरो जी, आपने इनकी कहानी सुनी और मातृभूमि के लिए जो एक प्रेम होता है, वो दिखावा नहीं होता, भीतर से होता है। कहानी का संदेश यही है कि बहुत सारे जो बाह्य आडंबर दिखते हैं, कुछ कुछ कहा जाता है ऊपर-ऊपर से देश प्रेम, मातृभूमि, अमृत महोत्सव देश का। लेकिन एक बहुत छोटा-सा, बहुत गहरे में एक व्यंग्य भी है कि दिखावा करना ये प्रेम नहीं है देश के प्रति, समाज के प्रति। बहुत बड़ा संदेश है इस कहानी में और सचमुच एक ऐसी चिनगारी दूर-दूर तक जाएगी और हमारी नसों में
एक धड़कन पैदा करेगी कि देश प्रेम क्या होता है। एक ग्रामीण परिवेश की कहानी और दो पीढ़ियों का द्वंद्व भी, पीढ़ियों का अंतराल कि जो दादी नानी की पीढ़ी, उसने जो अंग्रेजों का समय देखा था, गुलामी का समय, और आजादी के बाद का समय, जो नई पीढ़ी जो रात दिन मोबाइल में खोई रहती है, और ये पीढ़ियों का अंतराल है, तो वैचारिक द्वंद्व भी इस कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक राष्ट्रीय फलक पर अपनी भावना को, अपनी कथा धारा को किस रूप में व्यक्त किया, किस रूप में मोड़ा। स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दूसरी कथाकार हैं स्वर्णा किलकारी जी, तेलुगु से हैं। स्वर्णा किलकारी जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि अपनी कहानी का पाठ करें। Everyone. Today I am going to read the story Pardon Me Friend. This story is taken from my recently released book, story collection book, Nalla Bangara. The story name is Pardon Me Friend. I tidy up the house at least once a month. The walls should be spotless like white clouds. There shouldn't be much difference between the files and the. Today I thought of cleaning the library. Among my few possessions, books are one. I half opened the library door and gently held the book Vanavas in my hands. Just then, a WhatsApp message pinged. It was from my friend. The message contained the phone number of our old friend Samira. I had been waiting for this number for so long. I dialed immediately. The phone rang on the other end. I was extremely excited. How was her voice? What did she say? After 4 rings, a husky voice answered, "Hello, Samira." I wasn't sure if I called out her name or almost shouted it, but it was clear she didn't recognize me. I had no patience with it. Me, Aparna, your school. Aparna, she exclaimed louder than me. For a while, our conversation flowed faster than a rushing stream. I want to meet urgently. When shall we meet? I asked. You tell me, she said. I will do one thing. My son has no school the day after tomorrow. We both will come. Send me your address and share your location. Are you really coming? She asked, filled with endless surprise. After a bit more conversation, I hung up. Memories of school flashed before my eyes. In our class of 25, 15 of us girls, while 10 students assisted by artists from nearby Driving Klein, Kevin Klein, and Penagadapa. The local students always felt jealous of the bus commuters. Even if it seemed like it might rain or buses were running late, allowed to leave early before festivals and holidays. For those of us who remained boring, if there were small tasks, we had to do them ourselves. That's why the bus commuters seem to have a luxurious. Samir was one of them, coming from Southern Line. For some reason, she had a special fondness for me. She had a blue school uniform shirt with a specially stitched pocket. In it, she would bring favorite Badusha wrapped in a paper. More than Badusha, I loved that pocket. One I asked her, I don't have a pocket in my skirt. When did you get it stitched? We make our own clothes at home. Mom stitches everything. Shall I ask her to stitch a pocket for you too? Bring yours. I will have it done by the day after. 2 days later, I had a skirt with a pocket with a sense of pride. My right hand could always press the pocket whether I needed to put something in it or not. Seeing her happiness, Samir was even more delighted. I, in turn, would bring her sweets made by my mother and roses my father would bring home from work. Samira was someone who found joy in the smallest things, laughing, fighting, and playing our food at the park. By the time we finished 10th grade, an intermediate college, while Samira got married. Slowly, distance grew between us.
After all these years, finding her number, calling her, and talking to her. When my son Saket came home from school, I asked, "Shall we go to Warangal to meet my friend?" He had started enjoying traveling, watching the scenery from the car window, asking a million questions about animals and birds. He loved observing everything. So he totally jumped up and said, "Let's go, let's go." I immediately thought our Bible custom. We need to leave for Varanasi at 1 a.m. the day after tomorrow. I arrived half an hour early. As soon as we got into the car, I called Mira. But a little later, I got a number. This time it was her husband on the other end, giving directions to their house. Following his instructions, we finally reached the house. As I stepped out of the car and looked up at the house, I noticed a drainage canal running alongside the veranda. Small comfort stayed with me. Holding my son, I took a step forward when I heard a warm, welcoming voice. Samira stood there, beaming with a smile as wide as a tropical playpot. She used to be plump and cute in childhood. Now she seemed a bit fuller. Letting go of my son's hand, I hugged tight. Minute we stood like that. Her husband, my son, and Vikram watched us silently. "Come inside," she said, lifting my son and planting a firm on his cheek. "Hey, your mom is my childhood best friend. I like her a lot." My son didn't fully understand my sweetly, dimples forming on his cheeks. Samira's husband stepped out with my son, leaving us alone. Holding my hand, she led me to a house adjacent to the veranda. She handed me a tall plastic chair and sat on a small stool. She kept talking non-stop as I listened. I observed the house, a small home, but temperature, a proper place. As I looked around, I said my eye, large rats. Three or four of them ran across the floor, making noise. A chill ran down my spine. Samira, however, paid no to them and continued. She went to the kitchen twice. I scanned the room. A poster on the wall. I stood up behind me. Samira said, "Son is doing BFOC in Hyderabad," as she continued thinking about her life. The excitement before coming here faded. Just then, my son was in hand chocolates. I told uncle I want it, but still bought them for me. He said, bright eyes shining. "Wash your hands and come eat," Samira said. As he ran past, he tried to grab a rat's tail playfully. Oh, my voice filled irritation and urgency. Khalid, who had never seen me react that way strangely. Samira brought plates of food and followed with other dishes. "Samira, I'm not hungry right now. My aunt's granddaughter lives in Subedari. She invited me over when she heard I was coming. She's cooking for me," I said. "I said, let get your son eat." She pleaded. Husband also requested twice. "No, he takes a long time to eat. He needs to reach Hyderabad before it gets back." Not giving her a chance to insist, I firmly refused. She sighed and went to the kitchen, returning with two large bags. "What are these?" I asked. How can I show my love? You came all this way after so many years. You like them. Mustard yellow with an orange border, a rare combination. I was surprised, still remembered my favorite color. "I found this at the shop. As soon as we found out it was already half stitched. But I didn't let him off. I told him I would take it up, but had to have it. I sat there the whole morning until it was finished. "You like it?" she asked, breathless. An unknown emotion stayed with me. "It's beautiful. If you don't like it, I can fix it. The viewer don't mind." "No, no, it's perfect. Shall I get stitched for you?" She joked. She burst out laughing. "Layer upon layer, wave upon wave. You- These are for yours. Please take. Please take." A plead in her voice. I hugged her once more, said husband, and got into the car. 5 minutes later,
Mom, I'm hungry. Mukram, there is a restaurant on the way. Stopped at a restaurant and the waiter served 3 plates of food. I said, "You are in." Mukram looked surprised. But ma'am, her pre-order, you should eat too. "No, Mukram, I'm not hungry." I paid the bill, got into the car, and closed my eyes. Inside me, a storm raged. A sense of the rats, the picture on the wall, the sad, the homemade memories flooded a mile and bigger. By the time we reached home, it was 7. Smiling, Pranay opened the door. "How was the trip? How is your friend?" He asked a series of questions. I made an egg curry and pachadi soup for you. It's just tea. His words slowed. I kissed his forehead and went for a bath. Half my exhaustion faded. My heart felt heavy. At dinner, I barely ate. Pranay noticed. I pretended to have finished eating, dropped the plate in the sink, and went to bed, turning on my phone. A message from Samira. "Dear Appu, after all these years, you bringing and coming out of it. To see me made me feel sick. I can't even put it into words. Talking to you felt just like old times, like we were back in school again. My father ensured that both my younger brothers also their post now they are lecturers in colleges. But since I was a girl, he didn't. I needed help. Beyond 15, got me married to this man. He's a good person, but he works in a small company. Struggled a lot. At least we managed to educate our son. However, the dream of owning a house will remain unfulfilled. My son says, "Amma, I will study well, get a good job, and buy a house for all of you." Whether that will happen or not, just hearing those words fill my heart. Recently, my husband got a small salary hike. My son also got a part-time job at a bookstore. If we manage a little more, we are planning to get another house next month. But I thought of asking to wait a month, but then I'm afraid you might get hurt. Decide not to come at all. I made sakinalu and karapapalu for Satvik and Baksha for you. After that, I couldn't see anything. The entire ice block melted and reached my eyes. I went to the kitchen, out the Samira had packed, and placed them on the table. The one, and I bit into a piece of badusha. I whispered, "half courage juice." It finally felt like it. Thank you so much. Uh, Many thanks to the Sahitya Akademi for giving me this opportunity. Thank you, everyone. धन्यवाद सोना किलारी। आपने तेलुगु से एक मध्यवर्गीय जीवन की कहानी, एक मध्यवर्ग का जीवन है इस कमरे में बताया। एक जो स्कूल में वातावरण में, फिर उसका अपना जीवन शुरू होता है, वैवाहिक जीवन। पति को कम वेतन मिलता है, लेकिन उस परिस्थिति में भी किस तरह परिवार चलता है, इस मध्यवर्गीय जीवन की कहानी आपने लिखी और बहुत सुंदर ढंग से। हमारी तो इच्छा थी कि आप 2 पैराग्राफ तेलुगु में भी पढ़ती, क्योंकि वो आपकी अपनी भाषा है, और अपेक्षा भी थी कि साहित्य अकादमी में जो तमाम भाषाओं का संगम होता है। फिर खैर कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छी कहानी। और ये एक आप गौर करें कि कहानियों में चरित्र कम होते हैं, बहुत थोड़े से पात्र, 2 पात्र होते हैं, 3 पात्र होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। पात्रों की भीड़ नहीं रहती है, लेकिन मनोदशा का चित्रण करना, उन परिस्थितियों में रख कर एक अधिकार की विशेषता होती है। आपने एक तेलुगु समाज का, और उसमें 2 पीढ़ियों, यहाँ भी 2 पीढ़ियाँ हैं, 2 जीवन, एक प्रारंभिक जीवन जो छात्र-छात्राओं का जीवन होता है, और फिर गृहस्थ जीवन। दोनों का सामंजस्य किस तरह बनता है, इसको भी कहानी से आपको सीखना है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब मैं तीसरी कहानी
अब जो उड़िया की हैं, गोलप मंजरी कर उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी कविता का पाठ करें। Congratulations, everybody. The story is about of love. I am Golab Manjurkar from Odisha. Jai Jagannath. Khushi was trying her best to keep her page open. She was thinking, where did her mother go? What would happen if the train would leave? Could that man not purchase the thing? Khushi got angry and murmured, let her come. You will see the fun. But how would she teach her a lesson? Whenever she says or something, that man would come forward. No more will she behave like her real mother. Nowadays, whenever she complained, she had to be her hair were pulled down. She was always threatened, "What? I will tell everything to your father." Who is my father? Why should he be my father? A black complexion man looking so ugly. My father was very handsome, fair complexion and very. I don't like this man's bad complexion, good belly and a big mustache. I don't like him at all. She was dozing, reclining her head against the foot of the tree. She woke up when the train stopped with a jolt at the next station. When she looked around, called her mother repeatedly and cried loudly. All the passengers in the compartment gave her a pitiful look. One of them asked, "Why are you so? Where is your mother?" She cried more loud. The elderly woman sitting beside her asked politely, "Where is your mother? I have never seen her here." Khushi said, "My mother got down to purchase some snacks for my brother." She sighed loudly and suddenly got down from the train. She cast a vacant look all around. The crowd and the hawkers looked first. She held her bag tight and stood immobile. What would she do now? Where did her mother go? Leaving her brother? In her small brain. She sat on a solitary bench on the platform, holding her bag. Now she was all alone. Her only belonging was her bag. From the last evening till midnight, she is arranging things in her bag. Her mother told her that they would go to their by the early morning train to see their grandmother. That man would see them off at the station and come back. She was very happy thinking that she won't see the man at least for some days. She went to the miner beside the cage and said, "Look, tomorrow morning we are going to our village. In our village there are sea, sandhill, kazirela forest and so many flowers. So many people are there. My uncle, she said, Grandma, our house is full of people. I can have delicious such as cakes, khajas and many kinds of I cannot name them all. After I come back, I will tell you the rest of the things." Khushi was putting many things inside the bag and finishing the work assigned to her. She had to finish everything before that man came to the house. She was full of hatred for him because he was so much destructive. She was surprised how her mother was taken with him. She remembered those days when she was sitting between her father and mother, putting her legs on her father. After this man came, her mother had asked her to sleep on a bed put in a corner of the veranda. That man was telling her, "Mama, let her sleep in the open space, not in the sofa floor." Mother argued, "No, no, she's a small girl. She'll be afraid of being all alone." But she again lay on the bed in the platform, putting her head on the back. One stranger told her, "Oh, girl, where are you sleeping? Where are your parents?" Pussy woke up. The moment she looked at the face of that man with twinkling eyes, she could not decide what. The next moment, she got panicked, thinking that the man might be a kidnapper. She had in the station kidnapped to take lonely children, make them disabled, and earn money by making them beg.
Very cunningly, she said that her parents had taken her younger brother out. The man went away, but she was afraid, thinking that she might be sent to the police station. She got so much panicked that she cried loudly and ran out of the station. Now, where would she go? Who was there in the vast world to give shelter? Suddenly, she realized that it was her familiar place. She was walking on the walking to their old quarters and she could recognize her lane. She remembered the bakul tree with its flowers, the trees where Tuareg were situated. She felt that mother would run to embrace her as she was coming back from and serve her a hot meal. Kushi was arrived at the gate of the old quarter on Monday. For some time, she stood silently at the gate. She felt hungry and thirsty, but out of fear she could not enter into the camp. So she sat down as she was utterly exhausted. Some flowers from the book fell on her. She dreamt that she was the right at the exhaustion ground. She felt as if she was falling down and shouted. People ran to her and found her alone. They asked if she could see. She could not recognize anybody. Suddenly, she saw a known face. She held his leg tightly and said, Sarojam, the man also recognized her. Are you Khushi, the daughter of Nabahu? Somebody else asked about her parents. Fortunately, Sarojam took her to his house. Khushi started crying loudly, embracing her community. Saroj said, let it wash, take some food and take rest. Lucy relished the cake given to her to ask about her daughters Lucy and son Papu. The auntie said Lucy had married 6 months back and Papu is studying in London. None of you informed us where you had all gone. Lucy's face turned pale. She was on the verge of speaking out everything, but somehow she suppressed her feelings. Almost that she had experienced many new things in her life. She could not escape the community or her past experience. Once she was the pet of her mother and the apple of her father's eye. Now things have changed. She cannot tell anybody about the changes. For the hour of her situation, she bit her lips. She remembered how she was taking care of her brother and her mother branded her with the hut made of iron. She held the sun and controlled, but did not look at Kuchi was groaning in pain. Being patted by Kuchi, Kuchi fell into a deep slumber. She did not want to open her eyes. She was not aware of the dream, whether it was the day or the night. In her closed eyes, she could see the images of her past life. Kuchi used to spend more time in Kuchi auntie's house than in her own. Her mother and she treated each other as sisters. They were going to the market, cinema, and temple together. They and ate together. Her mother was changed after that man had cook on their home. He used to come after her father went to office and food. That time, mother changed completely. She had had many times auntie questioning her mother. Her mother got angry and cut off her relationship with them. She was not allowed to go to their house. But when that man came to their house, she was sent to Punyanti's house. Many times she had come back to their house and knocked on the door. But mother would open the door after some time. Her face would be looking, her eyes would be full of excitement. After tending her fixing his shut but that man would step to the side door. Pussy said to her mother, you tell that man not to come out. Why is he coming during absence of my father? I will inform my father. She reported the matter to her father, who was piercing her hair. Her father looked upset and said, is your mother sick? Whenever he comes here, your mother is happy. Kushi was unhappy with his words. She
She cried and with her tears, she said her father's hair became wet. She had never seen her father getting angry with her mother. He used to provide her with whatever. That man was also witness to unusual things like pizza, garlic bread, roll, vada pav, etc. Her mother used to take food with him in a plate. They fed each other. Once Lucy said to her mother, "Whatever my father brings for me, I will eat." Her mother said, "What does your father bring for me? He brings just two saris only a year. Have you seen or tasted those things at any time?" Lucy did not like to hear all this. She ran away and cried under a tree. Actually, she got afraid of that too. That day, when she woke up, she saw a horrible sight. Her father's dead body was hanging. She was extremely frightened. She said, "Papa." Father held her back and said, "See what your father has done to disgrace us in the public." Khushi looked at her dead father, shrieked, and lost it. After her father's death, there was nobody to comfort her, to give company to her. She was feeling utterly lonely. Her grandma, uncle, and auntie all were disgusted with her father. That man was discussing with the people as if he was the guardian of the household. Her grandma insisted her mother to go to their village, but she made peace of official work. She refused to go. Thereafter, her mother behaved like her stepmother. Khushi woke up listening to Puni Auntie's voice. She came to learn that Puni Auntie was willing to keep her in their house. But I can't manage if any police case is locked as a kidnap. So better I will be complaint in the police station. Khushi even could not try. She realized the police would drag and keep her with that ferocious man again. She prayed for tears. Puni Auntie forcefully got her up and gave some food. Tears ran down the faces of Khushi and Puni Auntie. The next morning at dawn, she came to the road tiptoe with the bag. Where to go? Walking on various trains, she finally arrived at the market and her feet refused to move, but she had reached the bus stop. She tried to catch a rebound bus so that she could recognize her. The conductor of the bus objected her climbing the bus as she was a girl. If a girl He said, "If a girl first steps into the bus will face an accident." He got down and stepped into another poorly-bound bus where many people sitting inside. She held her bag and sat in a three-seater seat. When the bus started, a family consisting of father, mother, and son climbed up. She was looking at them repeatedly. Two young men sat near her. She could not endure their sleeping. She sat close to the window. When the boss was running, one of them asked her, "Is there anybody with you or you are alone?" Pussy kept quiet. The man put his hand on her lap and another one in and through the back of the head. He said, "Are you afraid? No money, we will stay with you. We will go to Puri, enjoy ourselves in the city." Pussy's heart pounded. He shouted at them, "See, my uncle, aunt, and brother are sitting there. I am going to them." She immediately and went breathlessly where the three persons of the city. She lifted the boy from a lap and sat on his seat. She smiled at the woman. In an instant, she became one of the members of the family. As soon as the boss reached the office, she held her bag on her shoulder and stood up. That man only said, "What, my girl? We will leave you at your house." Do not believe that she would reach our house, but what she would do if her relatives won't allow her to stay with them. She was so much afraid that the she thought that if nobody cared about her, she would, she would she could take rest there. She closed her eyes and visualized that a number of white snakes were coming out of a cave to bite and sting her.
All these disturbed her mentally. From the market of Uttaranga's ran home, that woman was watching her, could not hear anything. Gasping for breath, she stood in front of her. She could see her grandma sitting on the veranda dining plates. She felt as if a grand banyan tree had stood there with its branches spread far and wide. So many birds had gathered, and they were sleeping. The squirrels were playing in the real grove. How cool was the shadow of the tree, and how safe was its shelter. No more Khushi was afraid of that man, of the police, or of the friends. After so many years, felt her sweating body, but she would protect herself from the stealing heat under the banyan tree. She called her grandma with a heart emotionally sad, with tearful eyes, and in a choking voice. By pressing the बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल मंजरीकर जी। अपने उड़िया की कहानी पढ़ी और अभी एक संयोग है, 3 महिला कथाकारों ने स्त्री विमर्श पर अपनी कहानियां पढ़ी। आज के दौर में हमारे स्त्री विमर्श बहुत महत्वपूर्ण है। मैं देख रहा था कि इनका संयुक्त परिवार है, माता पिता अन्य चाची चाची और एक संयुक्त परिवार की क्या समस्या हो सकती है, पिता के निधन के बाद फिर क्या स्थिति होती है परिवार की, इसका बहुत सटीक वर्णन आपने किया है कहानी में। और स्त्री विमर्श का स्वर जो अपने देश में मुखर हो रहा है इस दौर में, वो इतना महत्वपूर्ण है कि आपने रेखांकित किया। और निश्चित रूप से मैं ये भी आपसे भी अनुरोध करता कि एक पैराग्राफ उड़िया में पढ़ती, क्योंकि भाषाओं की ध्वनि जो निकलती है वो ध्वनि कहीं ना कहीं वायुमंडल में रहती है। उस भाषा का वजूद, उसका अस्तित्व भी सामने आता है। और जब तक अलग अलग तेलुगु भाषी या उड़िया भाषी न भी हो तो उनके कानों में ध्वनि जाती है और इसका असर कहीं ना कहीं मन इस पर होता है। तो इसलिए फिर भी आपका स्वागत है। आपने बहुत बढ़िया कहानी पढ़ी और एक संयुक्त परिवार को लेकर जो चिंताएं होती हैं, बच्चे को अगर अलग अकेला सुला दिया जाएगा तो डर न जाए, क्या बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से ये विश्लेषण आपकी कहानी में आया है। मैं आपका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिकार अंसार साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी कहानी पढ़ें। The name of my story, Tears of the Two Double Dots. We have 3 Shobhases in our Dakto Bazar area. One is Shobhas De, the other Shobhas Bishas, the third one Shobhas Sarkar. The first one is Snapper, the second one a goldsmith, and the third runs a firewood business. I have acquaintance with all 3, but I like Shobhas Sarkar the most. Spread over a large area at one side of the bazaar is his firewood workshop, lined with all kinds of wood in all kinds of varieties of ready, raw, hot, dry, or dry. Wood shipping, burning the day, one can get all kinds of logs here. Truck loads of timber get constantly bought by distributors and suppliers of all the neighboring villages. Three towns come in and come out as net bundles of firewood at a constant flow. The massive size of his workshop often is one in it, so some would all say it will be enough to make a dozen ships together. One characteristic of
firewood it warms itself and others at the same time. Each stalk of timbers has a thin tin plate label for the wedding, for the dead, for the funeral feast, for beggars, free meal services. A gigantic mound of wood in is top is enough to come for food. Those who have had the luck, this enormous operation of Shobha Sarkar, the homeopathic clinic or the jewelry business owned by the other two sources would hardly make a case. However, the business did take a good things speech and to get to it. Before he had 8 or 10 orcas constantly speaking wood into dogs. There are only two these days. Both are from my village, both are from my village. Two barley young lads in their late 20s, early 30s, Hafizul and Mufizul. No, they are not brothers, just villagers belonging to two differing paras. Both are married. Hafizul has a daughter, Mufizul. Both of them have working in Shobha's workshop as tabla choppers for the past 8 to 10 years. Now, by many people. If you have not seen it to eat, you won't believe what a stand that is. They can clean up with you guys within minutes. If they are invited for a treat, they will arrive and request the host humbly, get a couple of the rice ready. We are told the labor. As if their stomach had the endless hell fire blazing. With ice, they can have a meal out of rocks, bursting with axes and wood. They have aged faster before they could get a in. Asthmatic coughs have slipped into their lungs, so they have married early and requested their boss. Can you give us a hike of 50 bucks? Why on earth? Asked Subhash, surprised. You read to say salary was enough since we did not have any to feed. Now we do. Well, where on earth employers offer a hike to their employees out of sheer goodwill? Shobhas told both Hafizul and Mobizul clearly, "You surfing those damn axes for hours in my workshop. Get your blade ready from me." So that's what they do when they are access at the motor tone at their own home. The sound of their wives startled they come of their bed and get on with their chores. Serve water, cemented rice to the husband. Husbands swallow big gulps of rice with bites of onion and green chilies and head for Tatto Bazar. Their workshop owned by Subhash Sarkar. He waits for them and get all hot food just by look at them arriving. There you are. Go on now, roll. Sun will be up and you will go happy before you work. Perhaps taking away the few minutes they long to smoke a bidi in peace. He keeps them on their toes all the time during wars. The two of them, Kabaldars, stand facing each other with a piece of stump in between. A stump turns into log, and before long one stump disappears and Shubhas pulls another for them. Firewood piles
grew higher and to touch the sky, that the day gradually wanes. What to show Sam and Shubha say those damn axes don't want to come down. Is it you slackers want to raise for free? Do you? Happy answer. Even the sun dies out and we are more human brother. Let's drop it for today. We don't get any rest at your work. What we will get back at it tomorrow again. 4 cars loads of firewood go out right in from their for their eyes, mostly calm, ordered for a nearby wedding party. Was like all employers tries to turn a bit more from them before he allows them to leave. Okay, before you leave, just stop. Now Mokito went vocal. Dada, think it. We have more sleeping duties at home. You must take care of that every night. Understood? Shubha paid to get the hint. What do you mean? He asked. Abhiju smiled a little. Are you really not getting it? Oh, that is, what can we say? Shubha do not respond. Then that day, he suddenly declared a vacation for that. Leave it for today. Take it easy. Their act is froze in the air as such an unnatural declaration. What's wrong, Raja? What is the matter? Nothing, nothing. I forgot to tell you why the 4 cart loads of firewood from that day went to Vinod's daughter's wedding. Arrangement looks grand. I have came. Two of my couples are going to come for lunch with me. We shall eat together on a separate on our terms. My folks cannot be nibbling with the other side guest. Where his home was in the neighboring village. The two travelers went home, showered and arrived at the wedding home in the evening. The lunch they had on the wedding day was nothing short of divine, as if Allah Himself has had arranged a heavenly feast for them. But the news is before the meal would fade from their beach. Shobha Sarkar spoke his face unnaturally from Vinod where his daughter has been murdered by the in-laws. They found her wrapped in an electric chair. Vinod Berry decided not to cremate her in an electric chair and asked for a Odin one. Go and put somebody to the news. If Hafizul and Mofizul stand, they were not ready for something like this within 20 days of wedding. With every blow on the dog, their eyes swelled and flowed uncomfortably. They imagined the wood wet in that tear. They imagined leaves sprouting in that blood. They imagined in that like some miracle unfolding. Because where his daughter comes back to life. और आपने बंगला की अपनी कहानी पढ़ी, मुझे बार बार याद आ रहा था वेटिंग फॉर गोडो, जो बहुत प्रसिद्ध नाटक है, उसके 2 पात्र हैं, दोनों का संवाद है। बल्कि एक नई विधा जिसको एब्सर्ड नाटकों की गई, एब्सर्ड नाटक, एब्सर्ड बोध जीवन का। तो 2 पात्रों के जरिए जिस तरह संवाद और व्लादिमीर और गोगो 2 पात्र उस कहानी के हैं और दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और एक दूसरे से पूछता है कि भाई तुम क्यों बैठे हैं आप इस पेड़?
दूसरा कहता है कि हाँ सच में क्यों बैठे हैं। फिर कहता है कि हम इसी का इंतजार कर रहे हैं, इसका इंतजार कर रहे हैं। फिर कहता है कि हम गोरों का इंतजार कर रहे हैं। फिर कहता है कि हाँ हाँ हम गोरों का इंतजार कर रहे हैं। फिर कहता है ये गोरो कौन है, ये तो बात है, गोरो कौन है। और अंत में अंतिम जहाँ नाटक खत्म होता है, लेखक कहता है कि गोरो हमारा कभी नहीं आने वाला भविष्य है, जिसके इंतजार में हम बैठे हैं। वो भविष्य कभी आता नहीं है, उसका इंतजार। आपके अपनी कहानी में दो चरित्रों के माध्यम से जो आज के जीवन का संघर्ष और जो अपेक्षाएं हैं कि हम क्या अपेक्षा करते हैं समाज से, परिवार से, और किस स्थिति में हम रह रहे हैं, इसका बयान आपने किया। और सचमुच जो कहानी की चिंगारी है वही है कि अपने शीर्ष पर जाकर हम कोई सवाल खड़ा कर देते हैं। कहानी यही तो करती है, हम एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि क्या हो रहा है समाज में, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आज के समय में। और इस तरह आज चारों कहानियां कहीं न कहीं हमारे सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। लेखक कोई उपदेशक नहीं होता है, उपदेश नहीं देता है लेखक, लेकिन जो निष्कर्ष के रूप में हमारे सामने एक सवाल खड़ा करता है वही उसका संदेश होता है, वही संदेश मित्रों। और इस तरह ये लगता है कि हमारे देश की अलग अलग भाषाओं में जो संवेदना है, जो सोच है, जो समस्याएं हैं, उनसे हम कहीं ना कहीं रूबरू हो रहे हैं और आपस में साझा कर रहे हैं। हम उड़िया, बंगला, तेलुगु, सभी अलग अलग जो इन भाषाओं के लोग एक तरह से हिंदुस्तान की पूरी तस्वीर रख रहे हैं हमारे सामने कि जिस समय में हम जी रहे हैं उसमें मनुष्य की स्थिति क्या है, परिवार की स्थिति क्या है, समाज की स्थिति क्या है। कहानी इस सच से अगर साक्षात्कार करा देती है, लेखक की सबसे बड़ी सफलता यही है। मैं चारों कथाकारों को बधाई देता हूँ अपनी ओर से। और माननीय अध्यक्ष साहित्य अकादमी बैठे हैं, अगर दो शब्द कहें इन्हें प्रोत्साहन के लिए तो मैं उनका स्वागत करूंगा। माननीय माधव कौशिक जी। जी नहीं, मैं कहानी, यही तो आश्चर्य है कि एक 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 आ, एक अकथाकार को जो कथा नहीं लिखता है, वो इसलिए रखा गया शायद अध्यक्ष के मन में या सचिव के मन में होगा। एक दूसरी डिसिप्लिन का आदमी, दूसरी विधा का आदमी कहानियों का मूल्यांकन किस रूप में करता है, कहानियों की समझ किस तरह की बनती है, इसके लिए तो शायद मुझे रखा गया है। और मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया। और मैं आदर कौशिक जी को आमंत्रित करता हूँ कि प्रोत्साहन के दो शब्द कहें इनके प्रति। ये हमारा सौभाग्य है कि आज राम बच्चन राय जी जैसे विद्वान और इतने बड़े आलोचक जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के साहित्य को एक तरह की दिशा दी हमारे बीच में, एंड यू आर लकी एनफ टू हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ दैट ग्रेट मैन, बी हैप्पी। और राम बच्चन राय जी के बाद बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आप सब धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। और राम बच्चन राय जी का थैंक यू सर।
ये बैग ले लेना।